Assalamualaikum. Walaikum salam, sir. Okay, welcome to lecture 15 of Signal and Systems. So let me continue with our discussion that we left at in our lecture 14, and that is system function. So we want to analyze an LTI system with the help of Laplace transform. So analysis and so in time domain, if we have an LTI system specified by its impulse response, h of t, and if we apply some input, x of t, and then if we are interested in finding out what is the output or what is the response of this system, y of t. So in time domain, we know that for LTI system, we can just use input, convolve it with impulse response, and we will be able to find out the response of a system for any given input. So in time domain, this particular function which is impulse response of any LTI system, it contains all information about any given system. Now, when we consider this system in S domain, so impulse response h of t is now converted into h of s, which is known as system function. And the input is now going to be represented by this notation, that is the Laplace transform of the input. And now if we want to find out what is the response as a function of s, so we can make use of the convolution property of Laplace transform. So in time domain, convolution operation becomes multiplication operation. So all we need to do is take the Laplace transform of the input and multiply it with the system function of the system, and we will be able to find out the output as a function of s. So in S domain, this function, which is known by the name of system function, or we also call it transfer function. So just like impulse response and time domain, it can tell us everything about this LTI system. This system function, if we have an expression of system function along with its region of convergence, so it can also give us some important information about this LTI system, and this is what we want to cover today. So the first characterization of the system that we want to extract from the system function is causality. So in S domain, how we will know that given system is causal? So if you remember, in time domain, we already know that for a causal system, so for a causal LTI system, impulse response
is h of t equal to 0 for t less than 0. This is something which we have already covered in our previous lectures. Any system whose impulse response fulfill this requirement, that is h of t is 0 for t less than 0, it means system must be costly. Now let's transform this information in S domain. So you can consider that this is some kind of a signal which is 0 for t less than 0. So if signal has this property that for that initially it is 0 and then it becomes non-zero. So if you remember, this is the property of a signal जिसको हमने नाम दिया था right side signal. Okay, so what we can say is it means h of t is right sided signal. And then we can make use of the properties of region of convergence. And if you remember, if signal is right sided, what is the property of the region convergence? Ji, can anyone tell me? For right sided signal, region of convergence की क्या property होती है जी? Anyone? That real part of S. Real part of? Can you repeat? Real part of S is greater than minus sigma. No. माइनस सिग्मा तो आप उस वक्त कहेंगे जब आपको कोई फंक्शन गिवन हो ना. इट मींस कि आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह का एक फंक्शन h of s equal to this. Then you can say that the real part of s should be greater than minus. Right now हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं. तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने डिफाइन किया था, फॉर राइट साइडेड सिग्नल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ऑलवेज राइट हाफ प्लेन. लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. Region of convergence associated with the system function for a causal system is right half plane. So ये जो statement मैंने लिखी है, on what basis I have written this statement? Because we know that for any signal which is right-sided signal, if you take its Laplace transform, then the associated region of convergence of that Laplace transform must be right half plane. So based on that property, we know that for a causal LTI systems, its impulse response will always fulfill this condition. H of t will always be equal to 0 for t less than 0. It means when you take the Laplace transform of h of t, so h of t का जब हम Laplace transform find करेंगे और हमारे पास आ जाएगा system function. This system function, its region of convergence will always have this behavior. That is, region of convergence associated with the system function for a causal system is right half. Now, it should be important to point out that the converse of this statement is not true. ये जो statement मैंने लिखी है इसकी converse statement क्या बनेगी?
अगर मैं कहूं कि अगर लेट मी से कि if system function ROC is right half plane, then that doesn't necessarily mean कि system हमारा causal होगा. ठीक है, इसको मेक श्योर कि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसको अगर आप देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सिस्टम कॉजल होगा, उसका जो एसोसिएटेड आरओसी होगा वो राइट हाफ प्लेन होगा. ठीक है, अब इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी कि अगर सिस्टम फंक्शन का आरओसी राइट हाफ प्लेन हो तो सिस्टम कॉजल होगा. लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि ट्रू. दैट इज वाई मैंने क्या कहा कि द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज जनरली नॉट ट्रू. इट मीन्स अगर मैं इसको जो कन्वर्स स्टेटमेंट है, इसको मैं एक डिफरेंट इसको इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि अगर एक सिस्टम फंक्शन का आरओसी राइट हाफ प्लेन होगा, इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वो कॉजल है. तो फिर इसका मतलब क्या हो सकता है, वो मैं लिखा. Region of convergence of h of s. So if ROC of h of s is right half plane, it doesn't guarantee that a system is causal. So important point is कि जो मैं कह रहा था कि converse statement is not true. Okay, so if ROC of system function is right half plane, then it doesn't mean system is causal. But what does it mean then? Rather, it guarantees only that impulse response is right-sided. So ये जो मैंने स्टेटमेंट दी थी पिछले उसमें, दिस वन, कि अगर सिस्टम कॉजल होगा, आरओसी राइट हाफ प्लेन होगा. और अब हम कह रहे हैं कि अगर आरओसी राइट हाफ प्लेन होगा, इसका ये मतलब नहीं होगा कि सिस्टम कॉजल. इसका मतलब सिर्फ क्या होगा कि हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स राइट साइडेड है. नाउ जस्ट टू फर्दर clarify this point, let's draw the impulse response so that you can better understand. Let's assume कि हमारे पास एक सिस्टम का जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो इस किस्म का. इस केस में हमारे पास क्या है, h of t is 0 for t less than 0. और साथ में मैं ये भी लिखूंगा कि h of t क्या है, राइट साइड. ठीक हो गया. अब मैं इसका एक और
एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूं, that will clarify this point. Now consider another system जिसका impulse response इस किस्म का है. Now what I will say about this, I will say h of t is not equal to 0 for t less than 0. But I can still say कि ये signal क्या है? Right side. इस केस में, पहले केस में मैं कहूंगा कि मेरा सिस्टम क्या है? कॉजल है. इस केस में मैं क्या कहूंगा? सिस्टम इज नॉट कॉजल. सो इवन दो, ये अगर आप देखिए हमारे सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है? राइट साइडेड. बट एज मेंशन इन दिस स्टेटमेंट, राइट साइडेड डजंट मीन कि हमारा सिस्टम हमेशा कॉजल होगा. और इसकी सिंपल एग्जांपल भी मैंने दे दी है कि इंपल्स रिस्पॉन्स राइट साइडेड सिग्नल है बट इट इज नॉट कॉज. सो कमिंग टू दिस मेन पॉइंट, अगर तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सिस्टम फंक्शन का राइट हाफ प्लेन हो, इसका ये मतलब नहीं होगा कि हमारा सिस्टम कॉजल है. इसका सिर्फ और सिर्फ ये गारंटी ये हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इंपल्स रिस्पॉन्स जो होगा वो राइट साइडेड होगा. अब इंपल्स रिस्पॉन्स राइट साइडेड तो है, लेकिन ये कॉजल है या नहीं है, वी कैन नॉट से विद श्योरिटी. अगर इस किस्म का होगा तो फिर हम कहेंगे कि कॉजल है, अगर इस किस्म का होगा तो फिर हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम कॉजल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंपल्स रिस्पॉन्स जो है वो राइट साइड. बट देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि जिसमें हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट भी ट्रू होगी. इट मींस कि अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस राइट हाफ प्लेन होगा तो हम श्योरिटी के साथ कहेंगे कि हमारा सिस्टम कॉजल है. वो कौन से केस में होगा वो हम देख लेते हैं. However, if system function is rational, we can determine whether system is causal simply by checking if its region of convergence is a right half plane. So what is the difference? अब हम ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम फंक्शन रैशनल हो, इस केस में अगर तो ROC राइट हाफ प्लेन होगा तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है? कॉस. सो मैं इसको एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं that will conclude this topic. For a system with a rational system function, causality of the system is equivalent to the ROC
being the right half plane, which is usually to the right of the rightmost pole, to the right of the rightmost pole. Now let's solve some examples that will further clarify the two important conclusions that we have drawn. Case किसी भी LTI सिस्टम का सिस्टम फंक्शन अगर हमें पता हो तो उसको देख के हाउ कैन वी टेल कि ये हमारा सिस्टम कॉजल है या नहीं, ठीक है। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमने देख ली हैं। एक आपके पास ये है कि अगर आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज गिवन टू यू। अगर आपको सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है और वो इस तरह का है, ठीक है, जो कि क्लियर है कि ये कॉजल सिस्टम है, ठीक है। अब इस कॉजल सिस्टम का जब आप इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे, सॉरी, इस कॉजल सिस्टम का जब आप सिस्टम फंक्शन फाइंड करेंगे, उस सिस्टम फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि उस सिस्टम फंक्शन का जो आरओसी होगा वो क्या होगा, राइट हाफ। फिर हमें क्या स्टेटमेंट दी कि अगर एक सिस्टम फंक्शन आपको गिवन है और उसका आरओसी राइट हाफ प्लेन है तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि सिस्टम कॉजल है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स राइट साइडेड होगा, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक सिस्टम फंक्शन गिवन है और वो सिस्टम फंक्शन रैशनल सिस्टम फंक्शन है, इस केस में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर इसका सिस्टम फंक्शन रैशनल है, अगर इसका आरओसी जो है टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल है, जो कि राइट हाफ प्लेन बन जाएगा, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, कॉस्ट। That is the summary of whatever we have discussed so far. Okay, now let's solve some example related to this particular discussion. So let's assume कि हमें एक सिस्टम का impulse response given है and that is equal to e raised to power minus absolute value of t. Now अगर इसको हम impulse response के behavior को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये सिस्टम कॉजल है या नहीं। जी सर जी नॉन कॉजल है, नॉन कॉजल। दोनों ठीक। क्यों नॉन कॉजल है? बिकॉज नेगेटिव साइड पर भी हो, पॉजिटिव साइड। यस, सो हम कहेंगे कि सिंस impulse response is not equal to 0 for t less than 0, which is the necessary requirement, this system is not causal. This is something जो even अगर हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा नहीं है, फिर भी टाइम डोमेन में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज। नाउ अब अगर प्रॉपर्टी की तरफ हम चले जाए, हमने कहा था कि अगर सिस्टम कॉजल होगा तो उसके लिए आरओसी राइट हाफ प्लेन होगा। अब क्योंकि ये कॉजल नहीं है तो अब इसका जब हम सिस्टम फंक्शन फाइंड करें, ठीक है। सो आई नो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, यू ऑलरेडी नो, इस तरह के हम एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं कि इसका आपने इंपल्स रिस्पांस फाइंड करना है। सो ऑल यू नीड टू डू इज यूज दिस इंटीग्रल और इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मैं वो लिख रहा हूँ, दैट विल बी -2 डिवाइडेड बाय s square minus 1. So by applying Laplace transform to this signal आपके पास सिस्टम फंक्शन आ जाएगा। अब इस सिस्टम फंक्शन का आरओसी क्या होगा? If you look at this expression s square, तो अगर मैं इसको पोल जीरो प्लॉट करूं, पोल जीरो प्लॉट, तो s प्लेन में say sigma axis, j omega axis. So if you look at this, there are two poles. एक आपके पास +1 पे है
और एक आपके पास -1 पे पोल है, ठीक है, विच आर बेसिकली द रूट्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। सो इसका आरओसी क्या होगा जी? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? -1 से RES ग्रेटर होगा और +1 से कम होगा। यस, सो हम इसको इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, एक -1 से और एक +1 से, एंड देन आई कैन शेड दिस। तो ये मेरे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया, और मैं इसको मैथमेटिकली क्या लिखूंगा? आई विल से रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन +1 एंड ग्रेटर देन +1। सो यू कैन क्लियरली सी, क्योंकि सिस्टम जो है हमारा नॉन कॉजल है, तो इसका जो आरओसी है वो राइट हाफ प्लेन नहीं है बल्कि स्ट्रिप है। कैन यू रिमेंबर, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किस किस्म के सिग्नल का आरओसी स्ट्रिप होता है? एवरलास्टिंग सिग्नल का इनफाइनाइट ड्यूरेशन। इनफाइनाइट, यस। तो अगर आप इस सिग्नल को देखें, इसको अगर आप प्लॉट करें, यू कैन क्लियरली सी कि दिस सिग्नल इज डिफाइंड फॉर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी थ्रू आउट दिस टाइम इंटरवल। ये फंक्शन जो है डिफाइंड। तो ये अगर आप देखें, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर इन इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, और जिसको हमने टू साइडेड सिग्नल का नाम भी दिया था, तो वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको वेरीफाई होते नजर आ रही है कि इफ सिग्नल इज टू साइडेड इट्स आरओसी विल बी स्ट्रिप, और इसके लिए भी आपको नजर आ रहा है। Okay, let's solve another example. Example number 2 में हम जो impulse response given है, that is e power -t u of t. Okay. इस सिस्टम को इन टाइम डोमेन अगर हम देखें, यू कैन क्लियरली सी कि इसका बिहेवियर क्या है कि h of t is 0 for t less than 0. सो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है कॉजल। ओके, अब जो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ की थी कि इफ ए सिस्टम इज कॉजल, देन द आरओसी एसोसिएटेड with its system function must be right half plane, or it will be to the right of the rightmost pole. Okay, तो ये प्रॉपर्टी भी हम अब चेक कर सकते हैं इस फंक्शन का। आप इम्पल्स और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, यू विल गेट 1 ओवर s plus 1। सो इसका अगर हम एस प्लेन में इसको ग्राफिकली प्लॉट करें, सो वी हैव वन पोल एट -1। अब क्योंकि सिस्टम कॉजल है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, आरओसी क्या होना चाहिए? रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन -1। So you can clearly see कि हमारे पास ROC क्या है? It is right half plane. System is causal. ROC is right half plane. Okay, now let's consider another example. So now we are given system function. इस example में हमें LTI system का system function given, and it is equal to e raised to power s divided by s plus 1, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें गिवन है रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -1। सो विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन, व्हाट वी विल से कि ये जो एलटीआई सिस्टम है, इसका जो सिस्टम फंक्शन है, इसका आरओसी जो है वो राइट हाफ प्लेन है। ठीक है, इसको अगर मैं प्लॉट करूं, राइट हाफ प्लेन। अब हम उस
कंक्लूजन को देखना चाहते हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी सिस्टम एलटीआई सिस्टम का सिस्टम फंक्शन का आरओसी राइट हाफ प्लेन हो, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये सिस्टम कॉजल है। इसका सिर्फ ये मतलब हो सकता है कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो राइट साइडेड है, ठीक है। और लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि अगर तो सिस्टम फंक्शन रैशनल हो और फिर आरओसी राइट हाफ प्लेन हो, फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टम कॉजल। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो आपको सिस्टम फंक्शन गिवन है, क्या ये रैशनल है? Is it rational? No, sir. No. Yes, No. This is not rational. sir ji. This is not a polynomial. ठीक? Yes, sir. Yes, sir. सही. ठीक हो गया। सो ये इसका मतलब है कि रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब है कि रैशनल नहीं है, तो हम जो थर्ड हमने कंक्लूजन ड्रा की थी कि अगर सिस्टम फंक्शन रैशनल हो और फिर आरओसी राइट हाफ प्लेन हो, तो फिर सिस्टम कॉजल हो सकता है। अब लेट्स फाइंड आउट कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, ठीक है। सो हम इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर हम सिर्फ एक पेयर यूज करने की हमें जरूरत है, अगर मैं विदाउट गोइंग टू द डेरिवेशन, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, इस पेयर को हम ऑलरेडी बहुत दफा यूज कर चुके हैं। ई पावर माइनस टी यू ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 ओवर एस प्लस 1 और होता है रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का नाम दिया था, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ये था कि अगर आपके पास ये हो जाए टी प्लस 1, ये हो जाए ई पावर टी प्लस 1, तो हमने प्लस 1 का डिले डाल दिए, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई टू पावर एस इनटू एस प्लस 1, ठीक। इसको मैं अगर जस्ट टू टेल यू, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्स ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ये हो, और अगर हम एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट डिले लेके आ जाएं, तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ई पावर माइनस एस टी नॉट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो टी नॉट है वो -1 है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये टी जो है टी नॉट 1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाए। सो इट मीन्स कि ये जो हमें गिवन है, इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, ठीक है। और दिस इज व्हाट एच ऑफ टी इज। तो ये एच ऑफ टी को देके क्या कहेंगे, इज इट कॉजल? No, sir. No, because h of t is not equal to 0 for t less than 0. So system is not cosine. So this is all about causality. Now we will see कि system function अगर हमें given हो और ROC के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो हम सिस्टम की स्टेबिलिटी का हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। दिस इज इसको हम कवर करते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। मैं थोड़ा सा जस्ट गिव मी 10 मिनट्स में एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो मैं लेक्चर जो है ये नेक्स्ट मीटिंग 10 मिनट बाद शुरू करूँगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। थैंक यू।